So class, our next question, finding the lower speed limit while the road is banked. Road is banked. So yesterday we discussed about the banking of road. So here we have to find the lower speed limit. Lower speed limit. So this is theta. Theta is the angle of banking, and we have to find the lower speed limit of car. We have to find the lower speed limit of the car. So if the speed of the car is minimum, if the speed of the car is minimum, or we have to find the minimum speed, here the friction force is acting in a inclined plane in a upward direction. So देखो क्या होता है? So road is banked like this. Road is banked like this, and the car is moving like this, and the car is moving like this in a circular term. If you have to find the minimum speed limit of the car, then कार की स्पीड अगर मिनिमम वी हैव टू फाइंड, देन क्या होता है, अगर मिनिमम स्पीड अपने को फाइंड करनी है तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स जो लगता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है. कहाँ लगता है? अपवर्ड. क्योंकि कार की स्पीड स्लो होने के कारण कार कहाँ जाएगी भाई? नीचे की तरफ जाएंगे. पर कार के टायर्स और रोड के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स रहेगा, वो कहाँ रहेगा? इन अपवर्ड डायरेक्शन, राइट? सो हियर the friction force Fs is in the upward direction, right? And so one force is a normal force which is perpendicular to the object. See, this is a normal force and this force is perpendicular to the object, right? So one force is always at downward direction. That is your favorite force, that is a weight mg. Weight mg is acting vertically downwards. So now we have to find the component. Now we have to find the component of each and every force, right? So one force normal is going like this. So component of normal is like, if this angle is theta, the angle will be theta बन जाएगा. So this is a n cos theta and this is a n sin theta, right? So this is the component of a normal. Now we have to find the component of a friction force, that is the Fs. So here, so friction force is like this. So component is one component is like upward direction and this component is in a right direction. So this is angle is theta. So this angle is become theta. So this is a Fs cos theta. Theta के बाजू वाला हमेशा क्या होता है? एडजेसेंट साइड cos theta, and जो remaining बचता है वो Fs sin theta, right? Now we have to apply the balance condition. Now we have to apply the balance condition. So what is the balance condition? This is a very simple condition. ऊपर वाला फोर्स is equals to नीचे वाला फोर्स. Left hand side वाला फोर्स is equals to the right hand side वाला फोर्स. Now see, ऊपर वाला फोर्स n cos theta और ऊपर वाला फोर्स देखो n cos theta और Fs sin theta equals to नीचे वाला फोर्स. So नीचे वाला फोर्स mg. So write down the balance condition, that is the n cos theta plus Fs sin theta is equals to ऊपर वाला फोर्स is equals to नीचे वाला फोर्स, that is the mg. Here's the equation number 1. So now apply second balance condition. So left hand side वाला force is equals to right hand side वाला force. So see, n sin theta is equals to, here only one force in the left hand side, here is equals to Fs cos theta plus mv square upon r. That is the centrifugal force. That is the centrifugal force. One force is also here, that is the centrifugal force, that is the mv square upon r. This is the equation number 2. Rewrite this equation number 2 like this. I can write like this, n sin theta minus Fs cos theta is equals to mv square upon r. Equation number 3. कुछ नहीं किया, Fs को मैं इधर लेके आ गया, राइट? नाउ क्या करना है, दोनों का रेशियो लेना है 3/1.
3/1. So 3/1 लेने के बाद देखो क्या आ जाएगा, 3 means this n sin theta minus fs cos theta equals to mv square upon r, right, upon 1 n cos theta plus fs sin theta equals to mg, right. So we are going to take the ratio, so this upon this. So what happened, see, I can write like this, n sin theta minus fs cos theta is equals to mv square upon r upon mg upon n cos theta plus fs sin theta. So m get cancelled, right. Now this is our new equation. Now dividing this equation by n cos theta, इस इक्वेशन को अपने को n cos थीटा से डिवाइड करना है। सर डिवाइड करने का रीजन क्योंकि मुझे जो भी चाहिए वो tan में चाहिए, इसलिए मैं क्या करूंगा, n cos थीटा से डिवाइड करूंगा, सिंपलीफाई करने का वे है। सो डिवाइडिंग ईच एंड एवरी टर्म बाय n cos थीटा। सो इस टर्म को भी n cos थीटा से डिवाइड करना है, इसको भी n cos थीटा से, इसको भी n cos थीटा से और इसको भी n cos थीटा। सो n sin थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस fs cos theta upon n cos theta upon n cos theta upon n cos theta plus fs upon n sin theta upon cos theta is equals to v square upon rg. So n get cancel, sin upon cos, that is a tan. So we will get tan theta minus, so fs upon n means the friction force. So how it came? So we know that the friction force is fs equals to mu into n. Friction force equals to fs equals to mu into n. सर आपने तो ऐसा नहीं पढ़ा था, आपने तो सर ऐसा पढ़ा था, fs equals to mu into mg. So mg means also that is a normal, that is a normal force. So mg equals to normal, so I can write fs equals to mu into n. So fs upon n equals to mu, equals to mu. So fs upon n equals to mu, cos get cancelled, upon n get cancelled, cos upon cos 1 plus mu into tan theta equals to v square upon rg. Now we are going to find the minimum velocity from that equation. So that is a v square equals to rg into bracket tan theta minus mu upon 1 plus mu tan theta. This is the minimum velocity. So I can write like this, v minimum is equals to under root of rg into tan theta minus mu upon 1 plus mu tan theta. This is the minimum velocity or the lower speed limit, or the lower speed limit. So आपको याद यही रखना है, इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स रहेगा वो कहाँ रहेगा, इन अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है, तो आपका आंसर ऑटोमेटिक क्यों अपवर्ड डायरेक्शन में, जब वेलोसिटी मतलब गाड़ी की वेलोसिटी मिनिमम रहेगी तब उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ रहेगा, ऊपर की तरफ लगेगा भाई, ठीक है, क्योंकि गाड़ी कहाँ आएगी, नीचे की तरफ बसरेगी ना, इसलिए कहाँ आएगा फोर्स, अपवर्ड डायरेक्शन में, कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। और गाड़ी ऐसे मूव नहीं करेगी, गाड़ी जाएगी भाई सर्कुलर मोशन में, रोड इंक्लाइन है, रोड कैसा है, इंक्लाइन, ठीक है, आप इसको एक बार देख लो।